Hello, good morning one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 5, chapter 6, properties of matter. In the previous lecture we have discussed about the properties of matter, properties of solid, liquid and gases, that is elasticity and plasticity also. Okay, we also discussed about the hardness, toughness and strength of the material, solid material. Okay, today we are going to discuss about the new property of solid. Okay, only solid, not liquid, right? So, and that is the friction. So friction plays a very important role in our daily life. For example, suppose if I want to walk on this platform, okay, so there must be some force exerted between the sole of my footwear and the surface. If the oil is spill on this, then I am unable to walk on this platform. Okay, many times when we drive two-wheeler or four-wheeler, if there is no friction between the tires of the vehicle and the surface of the road, then we will not able to drive the vehicle. कभी कभी हम फिसल भी जाते हैं टू व्हीलर से, टर्न जब लेते तब. ओके, तो ये फ्रिक्शन क्या है देखते. मतलब फ्रिक्शन इज नथिंग बट द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, टू बॉडीज. ओके, अभी मान लो ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है. आई एम कीपिंग द डस्टर. ये वुडन का पार्ट रखो या ये पार्ट रखो. ओके, अभी देखो यहाँ पे when the body is at rest, okay, when I am applying some force on this duster, right, थोड़ा फोर्स लगाया कुछ न्यूटन, राइट, तो डस्टर विल नॉट मूव. क्यों नहीं मूव हो रहा है? इट मीन्स दैट देर इज समथिंग बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस. ओके, नाउ व्हेन आई एम अप्लाइंग लिटिल मोर फोर्स, और थोड़ा लगाया तो भी नहीं हो रहा है, एंड व्हेन आई अप्लाई द फोर्स इट्स बिगिन टू स्टार्ट. लेकिन स्टार्ट होने के लिए काफ़ी मुझे एफर्ट लग रहा है. I need to apply more force to begin the relative motion between these two bodies, okay, when they are in contact. तो अभी देखो यहाँ पे, now as long as I am applying a force, the body will continue to motion. जब तक मैं force लगाऊंगा तब तक वो motion में रहेगी. और एक बार मैंने force लगाना बंद कर दिया है, stop to apply the force, the body will also stop. It means whatever the force exerted between the two bodies, two surfaces, when they are in contact, when there is a which opposes the relative motion between the two bodies. और ये जो force है, this force is a tangential force, tangent to the surface, not perpendicular, not making some angle. Okay, तो हमेशा वो tangential force रहता है. Now, what is the direction of this frictional force? The direction of this frictional force is opposite to the motion of the body. My body is moving like this. Okay, लेकिन उसका force opposite direction पे. If I change the direction of motion of body, अगर मैंने डायरेक्शन चेंज भी कर दिया, then again the frictional force will also change the direction of it. Okay, it depends on the direction of motion of body. कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बॉडी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो हमेशा एक्ट होता है. That is which you call mechanical force, and this mechanical force exerted between the two surfaces when there is a relative motion between the two bodies. So let me explain again. The frictional force is that force which opposes the relative motion between the two bodies when they are in contact each other. Okay, कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो देखते हैं. Whenever the surface of one body slides over another, each body exerts a certain amount of force on the other body. Okay, these forces are tangential force to the surface. हमेशा tangential, that I explained. The force on each body is opposite to the direction of motion of between the two bodies. Okay, it prevents or opposes the relative motion. The frictional force always prevents or opposes the relative motion between the two bodies. Right? When an object is placed on any surface, does not move easily. Okay, आराम से मूव नहीं होगा वो. When a small force applied to it, right? We have to apply more force because of certain force of opposition acting between the two surfaces of the object and surface on which it is placed. Surface on which it is placed. वो अपोज करता है. To initiate motion between pair of surfaces, we need a certain minimum force. हमको कुछ minimum force लगता है so that the
there will be relative motion or to start the motion, right? After the motion begins, it is constantly opposed by natural force. Okay, this mechanical force between the two solids surfaces in contact with each other is called frictional force. अभी देखते हैं what is the friction. Friction क्या होता है? Friction is the property of a material which opposes the relative motion between the two bodies, okay, or which resists the relative motion between the two surfaces. Okay, चलो अभी उसका definition लिख लेते हैं friction का. Okay, now let's define the friction. It is the property which resists the relative motion between two surfaces in contact. Okay, it's called as friction. That property is called as friction, and the force exerted between the two bodies when they are having a relative motion between them, which oppose the relative motion between the two bodies when they are in contact, that force is called as frictional force. और जो property होती है उसको हम friction बोलते हैं, right? Now let us have these few example of frictional force. Few examples. The first example is the rolling body. The ball rolls on a surface. A ball rolls on surface. Okay, मेरे पास ball है. Okay, see. Now this ball will roll like this, right? Easily it can roll because the point of contact कम है यहाँ पे, right? So this will go as long as it has no any opposing force. जब तक उसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलता है तब तक वो रोल करते रहेगा, ग्राउंड पे चलता रहेगा, राइट? जैसे क्रिकेट बॉल होता है, ओके, तो जब बैट्समैन when the batsman hit the ball by his bat and the ball is rolling on the ground, okay, so it stop after some time. Why? Because of the frictional force between the grass or ground and the ball. Understand? It will continue to move in a straight line. So ball comes on the surface, it comes to rest after some time, due to frictional force, frictional force. Okay, then when I'm walking on this, right, why I'm able to walk? Because of there is a design or some grooves are made to the shoes or footwear, right? So designs are made. We are able to walk on the road because some design is made on footwear, okay, to get friction. कई बार हमारे जो फुटवेयर होते, चप्पल होती है, अगर वो घिस जाती है बार बार यूज़ करके, कंटिन्यू यूज़ करके, तो कभी हम फिसल जाते हैं, राइट? थोड़ा भी बारिश गिरा है, बारिश के समय में मड में वी स्लिप मेनी टाइम्स. वाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द चप्पल एंड द रोड has been reduced, totally reduced, and that's why we slip many times. So it is very difficult to walk without such opposing force, right? Now when we try to walk on the polished flooring
जब छोटे बच्चे घर में घूमते रहते और पानी गिरा रहता है इधर उधर, ओके, तो वो फिसल जाते हैं। बूढ़े लोग तो ज़्यादा फिसलते हैं, इसलिए जब भी टाइल्स पे पानी गिरा आता है, किसी ने पानी गिरा दिया तो हम पहले उसको साफ करते, क्लीन करते, ताकि कोई ना गिरे, राइट। तो बूढ़े लोग जो होते हैं वो थोड़े भी अगर चलने की कोशिश करे तो वो गिर जाते हैं और उनका फिर हड्डी टूट जाता है, कभी कमर में, कभी नी में, कभी पैर। हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द जो बूढ़े लोगों का एक्सीडेंट होता है, जो पैर प्रॉब्लम आता है, फ्रैक्चर होता है, वो घर में ही होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग देखते नहीं ठीक से और चलते समय वो पानी से फिसल जाते हैं, राइट। सो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्लिपिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन इन आवर हाउस ऑल्सो, ओके। सो relative motion between the fluid, that is liquid and gases, right, is also opposed naturally by friction, right. So example, boat on the surface of water, boat on the surface of water, इसमें भी फ्रिक्शन होता है, right, between the solid and liquid. Water experiences opposition to its motion, experiences opposing force, to its motion. So this is all about the different example of friction and frictional forces. Now what is the origin of friction? Origin of friction. Now when the two bodies are in contact, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ओके, दूसरा एक बॉडी ले यहाँ पे, राइट, दिस टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड व्हेन देयर इज अ फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स लगा यहाँ पे, when the force is applied, then there is a frictional force exerted between this body and another body, okay. So because of this portion, इसको बोलते हैं depressions, elevations and depressions, elevations and depressions between two surfaces. Actually इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग होता है इसे, लाइक दिस, व्हेन वी ब्लॉक टू फिंगर्स, अभी इंटरलॉक हो गया, ओके. सो देयर इज अ इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस, इंटरलॉकिंग ऑफ दिस एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ओके, एंड दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन अकर्स, ओके. सो if a smooth surface are observed under powerful microscope, तो ये जो है, अगर स्मूथ सरफेस देखा जाए पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो यू विल फाइंड दिस इलेवेशन एंड डिप्रेशन. दूसरा एग्जांपल देता हूँ. इफ आई एम टेकिंग दिस ग्लास मिरर, ओके, ग्लास मिरर विच इज़ वेरी स्मूथ एंड दिस ऑल्सो ग्लास स्लैब, व्हेन आई एम कीपिंग ऑन दिस, राइट, थोड़ा मैं इसको टेढ़ा करता हूँ, तो एक अगर मैं टेढ़ा भी करा तो ये नहीं गिरा, देखो एक्चुअली गिरना चाहिए, बट इट डर नॉट फॉल, सी, नहीं गिर रहा है, कितना टेढ़ा कर दिया, देखो, सी, आई मेड टू मच टिल्टेड, पूरा टिल्ट कर दिया मैंने, ऐसा हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, पूरा टिल्ट कर दिया तो भी, और ये एक्चुअली बहुत स्मूथ है, राइट, तो भी दिस ग्लास स्लैब नॉट स्लाइडिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन, स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू सर्फेसेस, अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई. तो यहाँ पे हमको ऐसे दिख नहीं रहा है विजुअली, फिजिकली नॉट सीन कि वहाँ पे डिप्रेशन एलिवेशन, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप पे अंदर देखा जाए तो यू विल फाइंड सच अ स्मॉल एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंड देयर इज इंटरलॉकिंग, दोनों इंटरलॉक हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, ओके. सो देयर इज सम इरेगुलरिटीज एंड प्रोजेक्शंस. स्मूथ सरफेस observed under powerful microscope, okay, then you will observe there is irregularities and projections,
between the two surfaces. Okay, so friction arises due to interlocking of these irregularities. Friction arises due to interlocking of irregularities between the surface in contact. Surface can be made extremely smooth by polishing it, okay, to avoid irregularities, but in case also friction does not decrease, तो फ्रिक्शन उल्टा बढ़ता है. हमको लगेगा कि ये अभी वुडन है, राइट, ये वुडन है, ये थोड़ा रफ है, राइट, डस्टर का, उसको और थोड़ा पॉलिश किया जाए और इसके ऊपर ये करो तो उल्टा ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा. वो लगता है कि पॉलिश करने के बाद थोड़ा फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन फ्रिक्शन कम नहीं होता है, फ्रिक्शन और भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो इंटरलॉकिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. अभी ये रफ सरफेस लिया तो इसका हो सकता है इंटरलॉकिंग थोड़ा कम होगा, बराबर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है. सरफेस कैन बी मेड एक्सट्रीमली स्मूथ. extremely smooth by polishing to avoid irregularities. But then also friction does not decrease, but again friction increases. Okay, पॉलिश करने के बाद भी फ्रिक्शन बढ़ता जाता है. Okay, so according to modern theory, right, so cause of friction is the force of attraction between the molecules of the two surfaces in actual contact. Okay, so there are two type of forces, that is the cohesive force and adhesive force. Okay, so when one body is in contact with another body, the right, so there will be the irregularity between the two surfaces. Okay, so इसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. So let us show the irregularity between the two surfaces. Okay, it is like this. तो ये होगा आपका एलिवेशन एंड डिप्रेशंस. तो ये इरेगुलरिटी की वजह से द फ्रिक्शन अकर्स. उसको और पॉलिश कर दे तो इसमें जो गैप है वो बढ़ जाता है, राइट, एंड इसलिए गैप भर गया तो और भी ज़्यादा उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉलिश सरफेस इन कॉन्टैक्ट. माइक्रोस्कोपिक व्यू of polished surface in contact. So due to small area, pressure at a point of contact is very high, right? Hence there is a strong force of attraction between the surface in contact. So let us see what are the two forces. One is cohesive force, okay, force of attraction between molecules of same and different substance.
Okay, if there is a force of attraction between molecule of same substance, if attraction between molecule of same substance called cohesive force, right? That will the frictional force. So it will be more. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्लास मिरर और ग्लास स्लैब मिरर, राइट, तो इसके बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि cohesive force, this is the what are the force of attraction between these two material, that is the glass material. So molecule of this glass and molecule of this glass slab, okay, so they will have more force of attraction and that's why they will have more frictional force as compared to, अभी देखो मेरा हाथ है या कपड़े पे रहे, कपड़े पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं, इजीली आई कैन मूव इट, ओके, आराम से गिर जाएगा वो, देखो हाथ पे अभी थोड़ा भी टेढ़ा कर दिया तो गिर जाएगा वो, राइट, लेकिन इस पर नहीं गिरता है, इस पर ज़्यादा देखो पूरा टिल्ट कर दिया मैंने एंगल और यहाँ पे देखो सीधा स्लाइड हो रहा है, इजीली इट कैन स्लाइड, वाई, क्योंकि कपड़े का मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा दैट विल बी लेस दैन द मॉलिक्यूल ऑफ दिस फोर्स. तो ये जो फोर्स होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, ओके, कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स. सो दैट इज द फोर्स बिटवीन molecules of glass. देखो कोई भी ग्लास स्लैब होगा, बड़ा वाला ग्लास स्लैब होगा, उसको ग्लास को निकालने के बहुत तकलीफ होता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट. बट इफ द ग्लास इज केप्ड ऑन द टेबल, तो टेबल का क्या वुडन, तो आराम से हम उसको उठा सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन ग्लास के ऊपर ग्लास रखा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट. सो इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of different substance, different material called adhesive force. ओके, जैसे आई एम एबल टू राइट ऑन दिस वाइट बोर्ड, क्यों, क्योंकि इंक के मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल बीच में एडिटिव फोर्स है, इसलिए वो स्टिक होता है. ऐसा अगर मान लो कि इफ़ आई एम यूजिंग सम अदर पेन, तो वो उस पर काम नहीं करेगा. अभी मैं पेन से अगर लिखने की कोशिश करूँ तो नहीं लिखेगा, क्योंकि पेन के टिप और इसका मॉलिक्यूल वो उसका जमता नहीं है, राइट. सो दिस इज व्हाट द एडिटिव फोर्स, डिफरेंट मटेरियल, इसलिए हम पेंट करते हैं, एडिजिव यूज करते हैं, वाई, बिकॉज इट कैन इजीली स्टिक टू द वॉल, ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ लुब्रिकेंट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड हाउ इट इज एडवांटेजेस. यस, लुब्रिकेंट जो होता है, जो हम मशीन को लुब्रिकेंट लगाते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सो दैट द मशीन कैन वर्क एफिशिएंटली. तो ये मशीन ऑयल क्या करता है कि ये जो गैप है, ये गैप भर डालता है वहाँ पे, जो भी इंटरलॉकिंग होता है, तो इंटरलॉकिंग होता नहीं है, जो भी इंटरलॉकिंग होता है दैट इंटरलॉकिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, वो इंटरलॉकिंग होता नहीं. अभी देखो यहाँ पे ये जम गया है, इंटरलॉकिंग हुआ है यहाँ, दे आर इन कॉन्टैक्ट. तो ऑयल क्या करेगा, इसको भर डालेगा पूरा, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको कम करेगा. दैट्स वाई द लुब्रिकेंट्स आर हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, right. So what are the advantages? Reduction in friction reduces dissipation of energy in machines, due to which efficiency of machine can increase. वो उसका efficiency भी बढ़ा देता है, कौन, lubricants, okay. Now the types of friction. There are 3 types of friction: static friction, kinetic friction, which also called a dynamic friction, and rolling friction. So let's have the types of friction.
Hello student. Now let us see the types of friction. There are three types of friction. One is static friction. Second is kinetic friction. And third one is rolling friction. So by the name itself we can understand that what could be the static, what could be the kinetic and what could be the rolling friction. Static matlab when the body is at rest. Kinetic when the body is in motion, when the two bodies are in relative motion, okay, or when the one body is moving on the other body, right? And rolling friction means the ball rolls on the ground, on the smooth surface. Okay, so static friction kya actually? Static friction is that friction when two bodies are in contact, okay, and begin to slide and just begin to slide. So whatever the force of friction exists between two surfaces is called static friction. I will show the demo for this so that you will understand better. Okay, see, if I am taking this paper or board, okay, cardboard, and this is a glass slab. Okay, now when I am applying, now अभी आप बोलोगे कि सर ये ग्लास स्लैब और कार्डबोर्ड जो है ये दोनों रेस्ट पे है, इसका मतलब इफ देयर इज एनी फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दी टू सरफेस, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि विच इज एट रेस्ट. अभी यहाँ पे ये क्यों इक्विलिब्रियम में? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ग्लास स्लैब. नाउ व्हेन आई अप्लाइंग द लिटिल फोर्स, थोड़ा फोर्स लगाया, इफ आई अप्लाई लिटिल फोर्स, स्टिल द ब्लॉक, द ग्लास स्लैब डज नॉट मूव. व्हाई इट डज नॉट मूव? बिकॉज that is opposed by the force exerted between these two surfaces. और थोड़ा फोर्स लगाया तो भी नहीं हो रहा है, मतलब which balances, right? तो frictional force क्या कर रहा है? That balances the relative motion between these two. Okay, now when applying force, अभी just begin to slide. So this is the maximum force up to which the body just begin to slide. जो maximum force लगा रहा हो, right? तो वो होगा तुम्हारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो दैट द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड. अंडरस्टैंड? और एट वंस इट कम इन मोशन, अभी मोशन में आ गया, राइट, मोशन में आ गया, तो क्या होगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. व्हेन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, वॉट एवर द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दिस टू सर्फेसेस, दैट विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन. अंडरस्टैंड? नॉट इन मोशन, जस्ट बिगिन टू स्लाइड. सो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द ब्लॉक ऑन दिस सरफेस एंड द ब्लॉक इज मूविंग दिस डायरेक्शन, दैट इज अप्लाइड फोर्स. ओके, एंड दिस द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दिस टू, यहाँ पे, तो विच इज इन दिस डायरेक्शन. तो ये होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड opposite to the motion of the body, and that is the tangential force. That is the tangential force exerted. So force of static friction equals to force of static friction equals to F, which balances it, equal to F and balances it. And F max is the force, F max is the maximum force so that body can begin to move. That's the applied force, F max, right?
So frictional force will balance the applied force. When the body is static is called force of static friction. The frictional force which balances applied force, जो हमने force लगाया हो, applied force when the body is static, is called force of static friction, is called force of static friction. In other words, static friction prevents sliding motion. Static friction prevents sliding motion. Now there are different conditions for this. Okay. So as we keep increasing the applied force F, a stage will come, right? So the first case, if F less than F max, okay, if F less than F max, then the force of static friction equal to F. Force of static friction equal to F. Applied force, okay, जो हम लगाया लेकिन मूव नहीं हो रहा है, right? So the body will not move. When F is equal to F max, F is equal to F max, maximum force. अब क्या होगा? The body will begin to slide. Okay, the object will start moving. Start moving. And तो यहाँ पे जो भी होगा that is the static friction that begin to slide. Okay, see F greater than or equal to F max, जब भी ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, राइट? तो तब क्या होगा? The kinetic friction comes into play. The kinetic friction comes into play. Okay, so this is all about the static friction. Now, why the force of static friction is known as self-adjusting force? Okay, children, the next question is why force of static friction is known as self-adjusting force. अभी देखो एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको. So when we are taking this cardboard and this is the wooden block kept on this, right? When initially I am applying force, right? So it will not move, but there is a static friction between the two surfaces, right? When I apply the more force और अपोज करेगा, now it's begin to slide. तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. Understand? Or if I reverse the direction of frictional force, then if I reverse the direction of applied force, the frictional force will also reverse. मतलब अपना आप एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इस पर और मैंने वेट रख दिया ज़्यादा, राइट? मान लो ग्लास स्लैब रख दिया, अभी वेट बढ़ा दिया मैंने. नाउ अप्लाई द फोर्स. व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल इंक्रीज मोर एंड मोर इंक्रीज. जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. इफ़ यू रिवर्स द डायरेक्शन of the applied force, it will also reverse the direction of frictional force, and that's why the frictional force is called as the self-adjusting force. So when the applied force is very small, when applied force
is very small, the block remains at rest. Block remain at rest, and hence force of friction also small, and hence force of friction also small. Force of friction also small. Okay, when applied force increases, when applied force increases by small value, the block still remains at rest. The block still remain at rest as the force of friction balances, applied force balances applied force. When applied force increases further, when applied force increases further, then frictional force also increases to maximum value. Frictional force reaches to maximum value. Okay, maximum value. So this is what, and if we reverse the direction, of applied force, if we reverse the direction of applied force, frictional force also reverses the direction of frictional force also reverses. And hence this frictional force is called as self-adjusting force. Hence frictional force known as self-adjusting force. Okay. Now what is the limiting force of friction? Limiting force of static friction. It is the maximum force so that the body just begin to slide. It is the maximum force. Now see, if you take a block which is kept on the horizontal surface, right, a wooden block है, and when we apply the force, maximum force लगा है यहाँ पे, so that the block just begin to slide and the frictional force exerted in the opposite direction, opposite to the motion of the body, right. So यहाँ पे जो भी force होगा, that is the limiting force of static friction, FL. Okay, it is the maximum force applied on a body so that body just begin to slide. Okay, or just start sliding. Body starts sliding over another body.
in other body. The value of frictional force is maximum. So this maximum frictional force is called limiting value of frictional force. It's called limiting value. Force of friction. Limiting value of force of friction. So it's very important concept, limiting force of static friction. Okay, the maximum force applied on the body so that there will be maximum limit frictional force. आप जितना force लगोगे उतना frictional force रहेगा, right? Just begin to slide, and this force is maximum for the sliding friction. It will be less for kinetic friction and very less for rolling friction. तो सबसे ज़्यादा limiting force of friction जो होगा वो किस में होगा? Static friction में होगा. Now let us study very important part of the lesson, that is the laws of static friction, laws of kinetic friction. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे laws of static friction. तो पहला law क्या है? Let us see the first law of static friction. Suppose if I am taking this horizontal surface on which the wooden block is placed. Okay, this is the center of gravity. This is the weight of the block, acts vertically downwards, mg, and the normal reaction is upward, that is n. Okay, now when we apply the force, जब इसे force लगाओगे these directions, when the applied force, right? So there will be the, and just when body just begin to slide, so there is exists the frictional force. There exists the frictional force, and the limiting force of static friction, जो भी FL है, limiting force of static friction, that may vary with the this weight. उसका जो वैल्यू हो चेंज होगा. मान लो if I am taking this cardboard and if I am taking the light duster on this. Okay, तो पहले मैंने डस्टर लिया कम वेट का और फोर्स लगाया तो इसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा. बट इफ़ आई एम टेकिंग दिस ब्लॉक ओवर इट, अभी मैं इसको वो ब्लॉक रख दिया तो अभी मैं जब फोर्स लगाऊँ यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, देखो पहले जो लगाया था आराम से मूव हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने अभी वेट बढ़ा दिया है, राइट? सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, or weight of the body, we can say that. Okay, normal reaction between the two surfaces in contact. So first law, the limiting force of static friction, that is FL is directly proportional to normal reaction when the two surfaces are in contact. Proportional normal reaction between the two surfaces in contact. So let's write this mathematically. FL is directly proportional to N. Okay, so what is N? N is the normal reaction. And FL is limiting force of friction. Static friction. तो उसको हम FS भी बोल सकते हैं. ओके, FSL और FL, उसको FS भी लिख सकते हैं आप. तो टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू टेक सम कांस्टेंट. सो FL इज इक्वल टू न्यू सफिक्स S for static into N, where mu S is coefficient of static friction. Mu S is coefficient of static friction.
coefficient of static friction. Okay, so mu s is equal to FL upon N. Actually both are forces, right? Newton. So mu s is dimensionless as well as unitless. Okay, so whereas mu s is dimensionless or unitless, mu s has no unit and no dimension. This is the first law of static friction. Okay, so that the limiting force of static friction is directly proportional to normal reaction. Now the second law is the limiting force of friction is independent of the apparent area of contact. तो ये जो apparent area है उस पर independent रहता है. अगर मान लो मैंने इसके ऊपर इसके पीछे और एक लगा दिया और एक ब्लॉक लिया, आइडेंटिकल ब्लॉक लिया, राइट, और इसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया और इसके ऊपर और एक रख दिया यहाँ पे. सपोज इफ आई एम कीपिंग ऑन दिस, ओके, तो ये इसका जो भी वेट है, सो M1 M2, राइट. और दूसरा जो केस है, इफ आई एम टेकिंग दिस, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वॉट एवर द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी सेम, दोनों केस में सेम रहेगा, बिकॉज वेट जो है, वेट नॉर्मल रिएक्शन इज सेम. एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन इज सेम, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल इंडिपेंडेंट ऑफ द what you call the area of contact. जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इससे इंडिपेंडेंट रहेगा. यहाँ पे भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, apparent area, but the value of limiting force of static friction will not depend on this area. इस पर डिपेंड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम है. दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लेट्स राइट द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकेंड लॉ, limiting force of static friction, limiting force of static friction is independent of apparent area between surfaces in contact, between two surfaces in contact, as long as normal reaction remains the same, as long as normal reaction is same. So this is the second law. थर्ड लॉ जो है इज वेरी सिंपल. थर्ड लॉ किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस बिटवीन द टू बॉडीज. ओके, अभी ये मैंने कार्डबोर्ड लिया, ये डस्टर लिया. अभी डस्टर का देखो ये जो स्पॉन्जी टाइप है, राइट, इसको मैंने रखा एंड जस्ट ट्राई टू बिगिन. तो शायद हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो, राइट. इसको मैंने अभी उल्टा किया, इट कैन ईजिली मूव. तो इट्स पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसिस व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट. सो दिस इज द थर्ड लॉ. इफ आई एम टेकिंग द ग्लास स्लैब, अभी मटेरियल चेंज कर दिया, नाउ ज़्यादा है क्योंकि इसका सरफेस अलग है. सो थर्ड लॉ इज the limiting force of static friction, the limiting force of static friction depends upon the material in contact
material or nature in contact material in contact or nature of the surface, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. ओके, material in contact and nature of surfaces. So it is independent of the area, apparent area of contact. apparent area पे डिपेंड नहीं रहता है, बट उसका नेचर कैसा है, राइट उसका मटेरियल कौन सा है. ग्लास के ऊपर ग्लास है तो ज़्यादा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ग्लास वुड होगा तो कम होगा. अभी देखो यहाँ पे, इफ़ आई एम टेकिंग दी वुड एंड ग्लास, ओके, तो हो सकता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी लेस, ओके, इन दिस केस. बट इफ आई एम टेकिंग बोथ द ग्लास, दोनों अगर ग्लास लिया तो सी मूव ही नहीं होगा वो ज़्यादा. इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो इट डिपेंड. तो ये थर्ड लॉ है. दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. Now let's begin with the second type of friction, that is the kinetic friction. The kinetic word represent means kinetic energy. Same way we have to take kinetic friction. The friction which exists between the two surfaces when there is a relative motion between them. Okay, अभी देखो यहाँ पे, जैसे ये वापस मैं इसका एग्जांपल लिया कार्डबोर्ड का, ओके, और ये वुडन ब्लॉक है. नाउ एट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, शुरू में क्या होगा, जब बिगिन टू स्लाइड, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. एट वन द ब्लॉक्स कम इनटू मोशन, जैसे एक बार शुरू हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, राइट. लेकिन शुरू में सिर्फ ज़्यादा फोर्स लगता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि, सो व्हाट आर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन when the two bodies are in contact and there is a relative motion between them, that type of friction is known as kinetic friction. Okay, and जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. दैट्स ऑल. इसके जो लॉज है, लॉज वही है, राइट. सो द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच द बॉडी कैन बिगिन टू स्लाइड. उसको स्लाइड होने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगता है, दैट इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, सो इसके जो लॉज है, लॉज भी वही होंगे जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में देखे, राइट. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा उसको भी लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. अगर मैंने वेट बढ़ा दिया इसका तो इट विल रिक्वायर मोर फोर्स फॉर स्लाइडिंग. अभी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, राइट. दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन लार. ओके, ये हो गया पहला लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सेकेंड लॉ क्या है? द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया. जो एपरेंट एरिया उससे इंडिपेंडेंट होता है, राइट. तो हमने जो स्टैटिक में वही देख लिया. थर्ड लॉ क्या है? द थर्ड लॉ इंडिकेट दैट द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल. कौन सा मटेरियल है और कौन सा सरफेस है, वेदर रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट. और इसमें चौथा लॉ भी है, काइनेटिक फ्रिक्शन में चौथा लॉ भी है. वो चौथा लॉ क्या है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट. लेकिन फोर्स द मोशन और वेलोसिटी शुड नॉट बी ग्रेटर और लेस. ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़े मोर भी नहीं होनी चाहिए, राइट. सो प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, जो रिलेटिव वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है. तो चलो फटाफट लिख लेते हैं अभी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में. सो once the sliding block on the surface start
the force of friction decreases. Force of friction decreases. Okay. Second point क्या है? Force required to keep the body. Force required to keep the body. Keep the body sliding steadily. Sliding steadily. Steadily. Constant. Okay. Is thus less than. Thus less than force required to just start. Force required to just start मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके. तो फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, म्यू एस ग्रेटर दैन म्यू के. The coefficient of static friction will be more for the static friction compared to kinetic friction. हम compare कर सकते हैं. The force of friction that come into play, force of friction that comes into play when a body is in steady state. When a body is in steady state of motion over another surface called kinetic friction, kinetic force of friction. Okay, so this is what the kinetic force of friction, the force of friction that come into play when a body is in steady state of motion over another surface called as kinetic force of friction, that is Fk we can see. Okay, then the friction between, now what is the kinetic friction? The friction between वो ये फोर्स था, अभी फ्रिक्शन डिफाइन करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, between two surfaces in contact when one body is actually sliding over the other, when one body is actually sliding over the other or another, what is actually sliding over the another. Sliding और begin to slide में फर्क है. If just begin to slide, the friction between them will be the static friction, and when the one body is sliding over the another, that friction is known as kinetic friction. ये आपको समझना है. Over the another is called kinetic friction, is called kinetic or dynamic friction, kinetic or dynamic friction. Now we have to study the four laws of kinetic friction. Laws of kinetic friction. Laws of kinetic friction. तो पहला आपको सिर्फ लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखने. लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो यू कैन इजीली राइट द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सेम टू सेम है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसको, और कुछ नहीं है. ओके, तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. द सेम वे वी हैव टू राइट द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स, एक्चुअली इट इज लिमिटिंग फोर्स. द फोर्स ऑफ kinetic friction Fk is directly proportional to normal reaction, is directly proportional
proportional to normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज़्यादा आप वेट लोगे उतना ज़्यादा, मतलब कार को थोड़ा धक्का लगाना है, मोशन में लाना है, जब भी गाड़ी बंद पड़ जाती तो हम लोग 4-5 लोग उसको धक्का मारते, राइट, तो 2-4-5 लोग से हो जाती कार, 2 आदमी हो तो भी कार आराम से हम स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन ट्रक को अगर पुश करना है, ट्रक को मोशन में लाना है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ट्रक का नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, बराबर। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन between two surfaces, between two surfaces, तो मैथमेटिकली लिखते हैं इसको, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। व्हाट इज म्यू के? म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वेयर mu k is coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction. Okay, so mu k can be written as fk upon normal reaction. This is the formula. You have to remember this formula for solving numerical. Second law, as usual, which is the limiting force of kinetic friction is independent of the apparent area of contact. Okay, वही जो स्टार्टिंग में वही था, force of kinetic friction, force of kinetic friction, force of kinetic friction is independent of shape, is independent of shape and apparent area, shape and apparent area, apparent area of the surface in contact. Surfaces in contact. Then the third law is force of kinetic friction depends upon the nature and material. Fk depends on nature and material, of surfaces in contact. ओके, चौथा लॉ भी लिखना है, लेट्स राइट द फोर्थ लॉ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं है, फोर्थ लॉ वो हम अभी इसमें लिख लेते हैं। तो फोर्थ लॉ लिख दे। फोर्थ लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस प्रोवाइडेड, ऑब्जेक्ट एंड सरफेस प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज nor too small. The very important fourth law of kinetic friction, जो स्टैटिक में नहीं है। Fourth law of kinetic friction, the magnitude of the force, the force of kinetic friction is independent of the relative velocity between the object and surface, surface provided that relative velocity not too large not too small, relative velocity is neither too large
too large or large nor too small. Okay, so this is all about the kinetic friction.